Anantam Shukrana Guruji for blessing us with this beautiful seva of reading and listening to the Shivpuran. The reading and listening of this Granth not only expiates our sins, it also opens the doors of salvation. So today we will be beginning with the synopsis of the last week. Last week we read chapter 20 of Rudra Samhita part 4. In this we read that Shiva and Parvati were extremely delighted to see the intelligence of their son Ganesha, who circumambulated them 7 times, and that was equivalent to circumambulating the earth 7 times as per the Vedas. Seeing this, the god and goddess were delighted and they resolved to perform his marriage. They jubilantly celebrated Ganesha's marriage to 2 sisters, Siddhi and Buddhi, who were the daughters of Prajapati Vishwarupa. After that, Ganesha, sometime he begot 2 sons. One was Shema, who was born to Siddhi, and one was Labha, who was born to Buddhi. As Ganesha was enjoying his inconceivable happiness with wives and sons, on the other hand, Kartikeya returned after circumambulating the earth. And then he was told by Narada, who was working on the mental process of Lord Shiva, that he was deceived by his own parents, and that is why they got Ganesha married before Kartikeya. Now Kartikeya was infuriated to hear all that, and Narada also told him that as per Vedas, anybody who deceives the other person, that person should not be seeing that person's face, the person who deceives them. So the infuriated Narada went, the infuriated Kartikeya, he went up to his parents, he bowed down in front of Shiva, and then he went to Kronika mountain, even though Shiva and Parvati had forbade him to go there. Now, till today, Kartikeya or Kumara lives there on that mountain, and one sight of his, one vision of his can dispel all kinds of sin. He continues to remain a bachelor, and in the month of Kartik, gods and sages go to that mountain to get his blessings and see Kartikeya. Now, of course, Parvati was grief-stricken because of the separation from her son, and she requested Lord Shiva to come with her to see Kumara on the Kronika mountain. Only for her happiness, Shiva agreed to go there, and when Shiva reached there, he assumed the form of a Jyotirlinga which is named Mallikarjun. And when Kartikeya got to know that his parents have come to see him, he wanted to go elsewhere. But on insistence of gods, he continued to stay there, but 3 yojanas away. And even till date, on new moon days, Shiva goes to see Kumara, and on full moon days, Parvati goes to see Kumara. With that, we come to the end of the synopsis, and this completes the section 4, which is the Kumara Khand. Today we will begin with the new section, which is Yuddha Khand, that is Rudra Samhita part 5, and we will read the first chapter, which is the description of the Tripuras. Shweta Aunty will be reading in English, and Rachna Aunty will be reading in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji for this seva. Rudra Samhita, Section 5, Yuddha Khanda, Chapter 1. Description of the Tripuras. Narada said, the excellent story of the householder Shiva, including that of Ganesha, Skanda, and others which confers bliss, has been heard by us. Now please narrate lovingly the story of how Shiva killed wicked persons playfully. How did the Lord burn off 3 cities of the Asuras with a single arrow simultaneously? What sort of an arrow was it? Please narrate the story of the moon-crescented Lord, conducive to the happiness of gods and sages, and a play of the magic of Shiva. Brahma said, when he was asked by Vyasa formally, the excellent sage Sanat Kumara narrated the story. I will repeat the same. Sanat Kumara said, O Vyasa of great intellect, listen to the story of moon-crescented Lord, how the annihilator of the universe burned the 3 cities with a single arrow. O great sage, when the Asura Taraka was killed by Skanda, the son of Shiva, his 3 sons performed austerities. The eldest of them was Tarakaksa, the middle one Vidyunmali, and the youngest Kamalkaksa. All of them were equal of strength. They were self-controlled, well-prepared, disciplined, truthful,
of steady mind, heroic and inimical to the gods. Eschewing all enjoyments, captivating the mind, they went to the cavern of the mountain Meru and performed a wonderful penance. The three sons of Tarka achieved all desires in the season of spring. They disdained music, the sound of instrument, as well as jubilation, and performed penances. In the summer season, they mastered sunshine. They lighted fires in all directions. Standing in their midst, they performed sacrifice with great devotion for the attainment of success. They lay unconscious in the blazing sunshine. During the rainy season, they fearlessly bore all the showers on their heads. In the autumn, they controlled their hunger and thirst. All good foodstuffs, steady, wholesome, and viscid, fruits, roots, and beverages they distributed among the hungry. They themselves remained like stones. In the early winter, they remained on top of the mountain with fortitude, unsupported in any of the four quarters. In the late winter, they stayed under water or wore wet dripping silken cloth or allowed themselves to be covered with dewdrops. They were not at all vexed or distressed thereby. They gradually increased the severity of the austerities. Thus the three excellent sons of Tarka performed penance with Brahma as the object of their worship. Maintaining strict severity in the austerities, the excellent asuras made their bodies emaciated by their penance. Standing on the bare ground on a single foot, the strong asuras performed the penance for 100 years. Taking in only air and enduring excessive heat and distress, the terrible and wicked souls continued the penance for 1,000 years. They remained standing on their heads for 1,000 years. They remained standing with their arms lifted for 100 years. Thus they bore extreme distress in their tenacious evil intent. They remained alert day and night. O sage, thus many years elapsed, even as they performed the penance. I think they had virtuous dedication of their souls in Brahma, these sons of Tarka. Satisfied by their presence, Brahma, the supreme lord of the gods, and asuras of great glory appeared in front of them in order to grant them boons. He was accompanied by sages, gods, and asuras. The grandfather of all living beings spoke to them thus, appeasing them. Brahma said, O great asuras, I am now pleased with your penance. I shall grant you everything. Speak out the boons you wish to have. O enemies of the gods, tell me why you have been performing this penance. I am the bestower of the fruits of all sorts of penance. I am the creator of everything forever. Sanat Kumara said, on hearing his words, they bowed to the grandfather with their palms joined in reverence and spoke to him, revealing their minds' desires slowly. The Asura said, O Lord of gods, if you are pleased, if boons are to be given to us, please grant us indestructibility at the hands of everyone, every living being. O Lord of the universe, make us steady. Protect us from enemies. Let not old age, sickness, and death befall us at any time. We wish to become free from old age and death. In the three worlds we shall subject all others to death. Of what avail are riches, vast earth, excellent cities, other sorts of vast enjoyments, or being positions and power? If one is to be swallowed by death in 5 days, O Brahma, everything else belonging to him is futile. This is our decisive thought. Sanat Kumara said, on hearing the words of those ascetic asuras, Brahma replied to them after remembering Shiva, his lord. Brahma said, O asuras, there cannot be invariable indestructibility. Please desist from asking for it. Seek some other boon, whatever you wish. O asuras, a creature is born, dies, and will be born surely. But no one will be free from old age or death in this world. Except Shiva, the destroyer of death, and Vishnu, all else are mortals. These two are the supervisors of virtue and evil and have manifest and unmanifest forms. If penance is performed for the harassment of the world, it shall be understood as gone. It is only a well-performed penance that can be fruitful. Ponder over this keenly, O faultless ones. Desist from seeking immortality. Immortality is impossible for the gods and the asuras. It is inaccessible. It cannot be warded off.
Hence choose boons whereby you shall do something equal to your own strength. Sanat Kumara said, on hearing the word of Brahma, they thought for a while and then replied to the grandfather of all the worlds. The Asuras said, O Lord, we have no mansion where we can stay happily, although we are valorous and invincible to our enemies. Build and give us 3 wonderful cities richly endowed with wealth and unaccessible even to the gods. O preceptor of the universe, Lord of the worlds, by your grace, we shall move about on the earth occupying these cities. Tarakaksa then said, let Vishwakarma make a city which cannot be broken even by the gods. Let that golden city be mine. Kamalaksha requested for a great silver city. They delighted. Vidyunmali requested for a steel-set magnetic city. We will join together during midday at the time of Abhijit, when the moon shall be in the constellation Pusya, when the dark clouds Pushkara and Avarta shower in plenty without being visible in the firmament with sporting clouds at the end of 1,000 years. These cities shall never join otherwise. O Brahma, when these cities are joined together, the Lord who embodies all gods, sitting in a wonderful chariot containing all necessary adjuncts, may in his distorted sport discharge a wonderful single arrow and pierce our cities. Lord Shiva is free from enmity with us. He is worthy of our worship and respect. How can he burn us? This is what we think in our minds. A person like him is difficult to get in the world. Sanat Kumara said, on hearing their words, Brahma, the grandfather and creator of the world, remembered Shiva and told them, let it be so. He ordered Maya, O Maya, build 3 cities, one of gold, another of silver, and third of steel. After ordering directly like this, Brahma returned to his abode in heaven, even as the sons of Taraka were watching. Then the intelligent Maya built the cities by means of his penance, the golden one for Tarakaksha, the silver one for Kamalaksha, and the steel one for Vidyunmali. The 3 fort-like excellent cities were in order in heaven, sky, and on the earth. After building the 3 cities for the Asuras, Maya established them there desiring their welfare. Entering the 3 cities thus, the sons of Taraka of great strength and valor experienced all enjoyments. They had many kalpa trees there. Elephants and horses were in plenty. There were many palaces set with gems. Aerial chariots shining like the solar sphere, set with Padmaraga stones, moving in all directions, looking like moonshine, illuminated the cities. There were many palaces, divine minarets, resembling the summits of the Mount Kailasha. Celestial damsels, Gandharvas, Siddhas, and Karanas were also there. There were temples of Rudra. In every house, people performed the rites of Agnihotra. There were excellent Brahmins, well versed in sacred text, and devoted to Shiva always. The cities were embellished with many trees in the well laid out gardens and parks as if they had dropped from heaven. There were beautiful tanks, lakes, wells, rivers, and huge ponds. They were very beautiful with plenty of fruit-bearing trees. The cities were decorated with camps and tents of various sizes and chariots with beautiful horses. There were herds of elephants in Rat too. There were time indicators, playgrounds, and different halls for Vedic studies. There were persons of various types, sinners, virtuous, pious, noble, and those of good conduct too. The place was sanctified everywhere by chaste ladies engaging in serving their husbands and averse to evil practices. The cities contained heroic asuras of great fortune accompanied by their wives, sons and Brahmins well versed in their principles and practices of Vedic and Smarta rites. They were strict adherents to their duties. People had broad chest and bull-like shoulders. Some were of peaceful nature and some of warlike temperament. Some were calm and some were furious. Some were hunchbacked, some were dwarfish. They were protected by Maya. Some had the blue lily petals. Their hair was curly and dark in hue. Maya had instructed them in the arts of warfare. The cities abounded in people engaged in terrific battles. There were many asuras whose heroism was sanctified by the worship of Brahma and Shiva. The asuras resembled the sun, the Maruts and Mahendra.
They were sturdy. Whatever sacred rites are mentioned in Shastras, Vedas, and Puranas as favorites of Shiva, as also the deities, favorites of Shiva, were found there. Thus the Asuras, sons of Tarka, after acquiring the boons, lived there subservient to Maya, a great devotee of Shiva. Abandoning the other parts in the three worlds, they entered the cities and ruled the kingdom following the principles of Shiva. O sage, a long time elapsed, even as they were engaged in meritorious activities and living happily, ruling over the good kingdom. This concludes chapter 1. Rachna Auntie will be reading in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji. Shukrana Guruji for this beautiful seva. रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे जयेश था, विद्युन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वथा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवैध हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण, यदि 5 ही दिनों के काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्यान्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि,
उन तपस्वी दैत्यों की ये बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर मांगो जो तुम्हें रुचता हो, मांग लो, क्योंकि दैत्यों इस भूतल पर जहाँ कहीं जो भी प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वो 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित होकर सुखपूर्वक निवास करें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सकें। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर वे क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेव में और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेद करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सुष्टिकृता लोक पितामह ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यों मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मैं ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युन्माली के लिए लौह में ये तीनों प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त था तथा हाथी घोड़ों से संपन्न था। उनमें मणिनिर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्म राग के बने हुए एवं सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चरणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उसमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों में
और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के पहाड़ से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थक तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपयोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय 1 समाप्त। जय गुरु जी।